We give all honor, all glory, and all thanks to our Lord and Savior, Jesus Christ. We are going to start with a word of prayer by Pastor Naresh Paul, and the translation will be done by Sister Pastor Nargis Paul, and also our Ambassador of India, Dr. Usha Kiran, is with us. She will be guiding us, helping us in reading the Bible verse and also the concluding prayer. All glory and all honor to our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को प्रभु हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी नाश ना हो प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिले, और पिता वो तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय ले कि आप मसीह की देह में उन्नति पाए, मसीह की देह में बढ़ते चले जाए। तेरा धन्यवाद देते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन कबूल करें। Amen. Amen. Hallelujah. As in the previous episode, we have been seeing that God has called us, God has chosen us, made us the co-citizen of the kingdom of God, and we are the royal priesthood. We are the holy nation. Among us, there is no discrimination. Among us, no partition of the upper caste, middle caste, lower caste, all between no scheduled caste, all are Pavitra Jati. We all are one Jati only, the holy Jati, that is a holy nation in the sight of God. और जैसे हमने पिछली एपिसोड में सुना कि हम परमेश्वर की पवित्र जाति हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हर एक दीवार को जो अलगाव की दीवार थी, जो भेदभाव की दीवार थी जाति की, वो सारी तोड़ डाली है। अभी हम एक हैं, एक ही जाति है, वो है परमेश्वर की पवित्र जाति और प्रभु यीशु मसीह के सहवारिस उत्तराधिकारी। Hallelujah. And then in the churches, as a few days back I was speaking about that false prophets, they talk about the divisions in the church, they talk about, they encourage the sexual immoralities, and also they encourage the divorce also in the churches, which is not according to the biblical concept, not according to the biblical model of the first century church. और हम आगे देखेंगे कि काफी सारे जो लीडर्स इन चर्च में अगुए हैं, वो तलाक को उत्साहित करते हैं या फिर व्यभिचार को जगह देते हैं कलीसिया में, जो बिल्कुल ठीक नहीं है और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बिल्कुल नहीं है। As I was talking about one of my testimony earlier, in US there was a Indian origin pastor who was married to American, white American wife, and the main job of them, both are running a church, but anybody who wants the divorce, they have to attend that church, they have to pay a huge number of the subscription membership fees to become the member of the church. Only the reason is because the wife of the pastor was a lawyer. She was a expert lawyer for conducting divorce. And then those who want divorce, any Christian community wants divorce, they become their member by paying a huge money, and then the wife of the pastor will be filing a case, and she will get the order for the divorce. और मैं एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला जो हिंदुस्तानी में है और यूएस में रहता है, और जो भी लोग डिवोर्स चाहिए जिनको, वो क्या करते थे, उसकी कलीसिया के मेंबर बन जाते थे और बहुत ही फीस रखती थी मेंबरशिप के लिए, वो बहुत फीस देने के लिए तैयार हो जाते थे। एक कारण था कि उनकी पत्नी जो अमेरिकन थी वो एक लॉयर थी और वो केस लड़ती थी और उनको डिवोर्स दिलाते थे। And when I came to know, I called, because he was an Indian pastor, I just called him, Pastor, what you are doing, it is against the biblical law. He was pleading to me, Pastor, please, I know that it is against the law of the Bible, but please don't stop. This is my commercial thing, otherwise I cannot survive in America. This is my livelihood. I have to survive on these things.
So it was a commercial business for them, for marriage, for giving marriage. Anybody who want marriage, they will come to the church. Anybody wants divorce, and they will do the divorce. और जब मुझे पता चला इस बात का, मैंने उनको कॉल किया और पूछा, पास्टर जी ये आप क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जो तलाक है वो परमेश्वर के वचन में नहीं है। लेकिन उसने बोला, और मैं क्या करूं, मेरे लिए मजबूरी है, कृपया मुझे मत रोकिए, क्योंकि ये मेरे लिए व्यवसाय बन चुका है और ये मेरे लिए कमाई का साधन है। इसलिए हम जो भी लोग आते हैं, डिवोर्स चाहिए होता है, हम उनको डिवोर्स दिला देते हैं। Many number of Christian family are, divorcing. Not only in America, I came to know now it is happening there in India also. और बहुत सारे मसीह परिवार हैं जो तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से, पति पत्नी। पहले अमेरिका में था, लेकिन अभी इंडिया में भी बहुत आम बात हो गई है। Let us read what Jesus Christ has spoken about this divorce. We should not go what people are talking, what the pastors are teaching in the church. They cannot justify, because Jesus himself has spoken about the divorce. In Christian community, there is no divorce at all. और हम वचन के द्वारा देखेंगे कि तलाक के बारे में क्या कहा गया है। पास्टर्स क्या सिखाते हैं चर्च में वो मायना रखता, लेकिन यीशु मसीह ने खुद सिखाया है कि तलाक के बारे में, और तलाक है ही नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। Let us read book of Matthew 19th chapter 9th verse, which was the teaching was given by Jesus himself. The teaching is not given by Mark, Luke, or Apostle Paul. No, Jesus himself is giving this teaching about the divorce. मत्ती 19:9 में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह खुद शिक्षा दी तलाक के बारे में। मत्ती ने या मरकुस या लूका ने ये शिक्षाएं नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने खुद शिक्षा दी तलाक के बारे में। Read book of Matthew 19th chapter 9th verse. और मैं तुझसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। So how many people are not doing व्यभिचार? 3. If somebody is divorcing, except one condition is given. What is the condition? Immoralities or the fornication. If they are found in, then they can divorce on that ground. But they are not supposed to have the second marriage. Read in English also. Before we go for the explanation, read in English also. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. And whoever marries her, who is divorced, commits adultery. So to a divorced wife, third person is again marrying. It means they are committing adultery. Glory to God. They are committing adultery. Glory to God. We have to understand. This is very, very clearly, it is spoken here in the Word of God. Book of Matthew, it is mentioned very, very clearly. और मत्ती में बहुत साफ लिखा हुआ है कि जो अपनी पत्नी को छोड़ता है और दूसरी पत्नी कर लेता है, दूसरा विवाह करता है, वो जो है वो व्यभिचार करता है। इस प्रकार यहाँ पे 3 लोग व्यभिचार कर रहे हैं। तो मत्ती की पुस्तक में बहुत साफ लिखा गया है कि व्यभिचार क्या है। It means the divorce cannot be there unless in one condition. The divorce cannot be there. Because of this reason, the first century churches, they were, keep on multiplying, because this was very unusual thing. Earlier in the Judaism and all, if suppose somebody, the wife is found in adultery, it means the judgment was, stoning her to the death. That was the punishment. So here, as that was as per the Moses law, if anybody is found in adultery, people will stone her to the death. But here, word of God is very clear. You cannot even divorce. Even if suppose some such things are found, the word of God, the counseling says,
you should not divorce. If you are divorcing, not only you are committing adultery, your wife will also be committing adultery. Third person who will be marrying a divorced wife, he is also committing adultery. And all adulterers will not inherit into the kingdom of God. They will be in the hell only. Very crystal clear promises of God, and the Bible verse in the book of Revelation 21, 8th chapter, it says very clearly about the और punishment. जैसे हमने और मूसा के व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाती थी तो उसको पथराव करके मार देना ही आज्ञा दी गई थी, इसलिए मार दिया जाता था। लेकिन अब के समय में क्या है, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि कोई और बिल्कुल कोई और बहाने से तलाक नहीं दी जा सकती, लेकिन सिर्फ एक कारण है, वो है व्यभिचार। अगर व्यभिचारी कोई है तो फिर एक पति पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर वो अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वो खुद भी व्यभिचार करता है, अपनी पत्नी से भी व्यभिचार करवाता है, और वो जो व्यक्ति उसकी पत्नी से शादी करता है वो भी व्यभिचार करता है। इसका मतलब 3 लोग जो हैं यहाँ पे व्यभिचारी गिने जाएंगे। This is the law given by Jesus Christ. ये जो कानून है यीशु मसीह द्वारा दिया गया है। It is not given by Paul, it is not given by Peter, it is not given by John. Jesus himself has given this law. This is called the biblical law. ये व्यवस्था जो है बाइबल की व्यवस्था है, और ये यीशु मसीह द्वारा दी गई है। पौलुस के द्वारा नहीं, पतरस के द्वारा नहीं, यूहन्ना के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, यीशु मसीह ने खुद ये व्यवस्था इस वचन के द्वारा दी है। In US and European country, among the Christians, very easy to divorce for simple reason. The simple reason is that husband has not done cooking properly, divorce. Or husband has spoken to somebody, secretary, the wife has seen, divorce. Or for a silly reason, they go for the divorce. It is very unfortunate. According to the Bible, during the marriage, the father or the husband will leave his mother and father, and they shall cleave with one another, and they shall become one body. That was considered as a holy, and that marriage cannot be broken. That is the. I'm not taking in depth about this thing. Otherwise, there's a big teaching on these things only. Glory to God. Hallelujah. और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, छोटे छोटे कारणों के कारण भी लोग क्या कर लेते हैं, तलाक दे देते हैं एक दूसरे को। जैसे सोचिए कि पति ने खाना ठीक तरह नहीं बनाया, या फिर पत्नी ने उसको अपनी सेक्रेटरी से तलाक So another one, sect of people started because they could not stick to this biblical law of not divorcing their wife, not to go for the second marriage, not to go for the third marriage. But I will explain you that it's happening there in many of the churches. That is why that group of people started, because for them, giving divorce only from the mouth 3 times, divorce, talak, they are happy with that thing, and they go for the second and third because they could not stick to this biblical law in the first century. और पहली सदी में क्या हुआ, ये बात बहुत आम हो गई कि जैसे मोहम्मद थे, वो 500 साल के बाद वो पैदा हुए और उन्होंने दूसरा एक धर्म परिवर्तन किया, उसकी और लोग क्योंकि इस चल पाए। व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है।
Glory to God. So as per the I biblical, say to you Ah. that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. so repeatedly, Jesus has given this law. Not once, not twice. Repeatedly, Jesus has spoken about that they cannot divorce. Among the chosen children of God, Christianity, there is no divorce. Very repeatedly it is mentioned, but it is very unfortunate. Number of divorces are happening in the churches. As I told you, in US, I found that pastor and wife, they are expert in making You divorce. are in mute. Huh? Once again? Sir, unmute yourself. Yeah, so as per the Bible, it is very clear. Repeatedly, Jesus is talking about, there is no divorce. Divorce, and then there is no second marriage. The spouse should not marry till he or she is alive. They cannot remarry. और बार बार यीशु मसीह वचन के द्वारा कह रहे हैं कि कोई तलाक नहीं है और दोबारा शादी होना भी सही नहीं है जब तक तो पति पत्नी मर ना जाए उससे पहले वो दोबारा शादी नहीं कर सकते। Hallelujah. Also read now, same, the next verse. You can read the second verse also. Book of फिर तुम सुन चुके हो